Okay. Sure, I can share the screen. Yes, we can see your screen. Hi guys. You can see the screen, right? Yeah. Okay, perfect. I just need to set up this window. So what do you think? Should we do it in English, Urdu, or how's the? I think maybe you can do certain stuff in Urdu as well. I think all the participants are from Pakistan, or I think might be. So let me check. Okay. Yeah, no problem. We can do it in Urdu. It's totally fine. It's absolutely fine. A mixture can be a good one. Sorry? It can be a mixture as well. Ah.
It can be a mixture as well. That's also No, nice. man, your voice is breaking, or is it the case with me only? Can everyone hear me properly, or it's with Amir? Can hear clearly. You can hear clearly, Sajid. Okay. Yes, I can hear clearly. Okay, so something wrong with my internet. Sorry about that. But we also can hear you clearly. That's strange. The data is being lost somewhere in the middle. So, Naman, just let me know जब शुरू करना हो तो we can start. Just let me know when you want to start me. So by the time everybody joins, so maybe we can do a little chit chat before it starts, probably. Khurram, if you're okay with that. Yeah. I'm here for any kind of a chit chat. Yeah, we have a lot of familiar people over here. Amir Fahad. Then we have Wasif over here. Yeah, exactly. So, see some familiar faces. Okay. Meanwhile, just a request on Numan, we can mix it. We can have it English. We can have it Urdu. Okay. I can also speak Punjabi, so if that works. But I can. लेकिन मुझे फैसलाबाद लोगों के जैसे जुगते नहीं मारने आती, लेकिन it will work. Okay. So just to request, मेरा जो actually जो इस तरह के sessions करने का style होता है कि I try कि आप लोग as much as participate करें. I don't want to be the only guy talking in this whole session, which is for almost 60 minutes or 65 minutes. So I would request you two things. First thing is, if you can turn on your video, I think brilliant. Then at least हम कुछ human level का connection बना सकते हैं. And the second request is just to participate, ask questions, and share your questions in the chat. And I hope Naman can help me. I will also have a view on the chat, but if I miss something, then just let me know. Yeah, so those are the things. So let's try to make this session as much interactive as possible, because I believe we can always discuss something और उसी से ideas वगैरह ज़्यादा आते हैं. Okay, anyone willing to turn on your video? It's totally fine. Working from home, and it's really a tough call these days. It's totally fine. It's fine. It's perfect. मैंने ऊपर सिर्फ जेल लगाई है और कुछ नहीं किया. I have not done anything yet. लेकिन this is just to. It's fine. It's perfect. जबरदस्त. It's okay. हम सबको पता है कि work from home. कुछ मेरी साइड से अगर background noises आएंगे तो just good. See, हम अब एक थोड़ा सा workshop type environment बना रहे हैं. It's up to you. Keep it on. Right. So Okay, let me start. Yeah. Yeah, go ahead. I formally welcome you to all to this webinar of PMI Lahore, PMI Agile Lahore chapter. Myself heading the Lahore chapter, and I would like to thank Khurram for sparing his precious time to deliver this session. Let me briefly introduce Agile Society. Agile Society
He's been here in Pakistan from 2014 till now, and there are 3 chapters that are operating. One is Islamabad, Lahore, and Karachi, and there is a national team. So the main purpose of was to set up this society is to share the knowledge among the gurus regarding Agile, and to bring gurus on one forum to share their knowledge and to benefit from one another. In this session, in this session, our speaker is Khurram. Khurram has more than 17 years of experience in software industry. He has worked in Pakistan and Sweden with startups, SMEs, and enterprises in the industry spanning telecom, software, asset management, data privacy, and financial services with distributed and co-located Agile teams. Khurram is an overseas trained coach and an IC Agile authorized instructor for Agile team, coaching tracks like ICP-ACC and ICP-ATF. He's certified trainer by training from the back of the room practitioner course and an Agile trainer CSM and CSPO. Khurram holds a broad range of further certifications into IC Agile coaching and enterprise coaching tracks. Scrum, he is also Scrum Alliance certified team coach and certified Agile leadership and certified Scrum professional. He is an International Coach Federation member as well. So this is a brief of society and introduction of Khurram. Now it's over to Khurram to start his session, basically. Good. Yeah, thank you very much for such a nice introduction, Numan. Thank you very much. Yeah, it felt so good, right? Okay, so what happened is there's a brief history about this topic. Numan reached out for if I can join this platform to give a talk. तो मेरे ज़िम्मे काफ़ी और topics थे, and then I said, okay, the topics that we have been doing earlier, they have been very Agile-ish kind of things, and I just want to do something different. And I posted a message in the community that I also co-founded, and there was like one person who's also here, Usman, and there was another person, Amara, who shared some thoughts on what could be the next step that I can talk about. Then I kept on thinking, and they gave some inputs, and I felt like, oh yes, I think they have a lot, and they have a number of stories that I can share. तो उसके ऊपर मैंने सोचना शुरू किया, and then I said, okay, let's target planning, metrics, measurement, and then the third would be team motivation or productivity. So yeah, so let me, okay. It's not working. Okay, good. So it's a set of, this is my in brief. Okay, this is going too fast. Yeah, this should be here. Press too many times. So yeah, very brief history in the work experience. It's been quite interesting. I worked with several teams and organizations with in different countries, and so far it's been very nice, nice experience. So I'm associated with many organizations, and I'm currently program or I say team member for Global Scrum Gathering, which is happening in June. Yeah. Similarly, like 5-6 years ago, I also found this, okay, there's something more needs to be done. Agile Peak is doing wonderful work. Perhaps we can also complement. And then I co-founded Pakistan Agile Scrum Exchange, PASE and ASTI, to promote more of Scrum coaching, facilitation, and many other certification courses. Yeah. So that's in brief. I don't want to go deep into this because if you can find me on LinkedIn, and I'm happy to answer any other questions. Okay, so yeah, so this is the matrices, the documentation, the planning.
You might have heard about control charts, code coverage, sprint burn down, product backlog, community CVFD, epic, user stories, defects. So what will be happening, I will not be directly talking more about this one. मैंने सोचा कि we have always been talking about ये, what are these things, but I just wanted to talk about these things from a from a different point of view. Let me fix this thing so you can get a better view. So मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा different point of view से देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने conversation की, तो मैं कुछ months पहले मैं एक पाकिस्तान में एक executive level से बात कर रहा था बंदे से, and the person said कि we are also doing agile और हम velocity वगैरह भी करते हैं. So that was the definition of the person, and that really made me think क्या is it the true reflection के जो हम agile वगैरह को बताते हैं करते हैं कि नहीं. And once कुछ लोग admit हो रहे हैं, so please help me admit them, because otherwise keep getting the pop-up. तो ये तो थोड़ी सी history. अब ये है कि documentation है, planning है, measurement है. So it's a question to you, how many of you are currently happy with the way you are doing documentation, you are doing planning, and you are doing metrics? So you can either write in the chat, or you can just unmute yourself and share your thoughts. Hi, this is Amir from Germany. I work in a German company, Vienna, Deutschland, and I'm quite satisfied with the planning and tracing and a kind of documentation as well. Definitely, it's evolving. It was in every sprint, new people join, we learn from each other, and then we somehow amend it based on the feedback. But things are good so far. Mm-hmm. Yeah, good to see you, Amr, and thanks for sharing. Anyone else? So if you are in Germany, they are really good in documentation and planning. Yeah. Okay. Any other thoughts? Okay, it's Ajit. From my side, I have the textile garments manufacturing background. I'm working as engineering manager. So from my side, what we mostly focus on the planning, and the execution. So we put more than 50% time on the planning, and more than 50%, how I can say that 60% times on planning and 40% on measurement and execution. And the documentation, we keep part in the execution, like the measurement. Mm-hmm. And I think sometimes we have a lot of problems in the execution, and then we go back and see if we did plan the wrong thing, or we did sometimes we have the hypothesis when we plan something, okay, it will go like this. And those countermeasures that we develop in the planning stage sometimes did not get well. And then on the measurement side, we have to come back again and the plan, replan. And that means sometimes we will be working on our planning accuracy, right? So measurement is something and planning accuracy is something, right? So in measurement, not only measuring the results, but also measuring our planning accuracy, our hypothesis, how much accurate we plan the things. Okay. So this is my thought. Yeah, thank you, Sajid. And I also see some comments. Mostly we work on planning and measurement, and the documentation is part of the measurement. Perfect. Usman is saying measurement and reporting could be better. Happy to with the rest. Yeah. So these are some of the aspects. So I mean, if you look back, अगर आप Agile की history को पढ़ें, then how it mainly started. So they were like 3, I would say, main challenges they were facing, and they really wanted to have this Agile kind of a moment. First one was they have to follow heavy processes. Okay, if you have heard about RUP, a CMM level 5, if you have to do something smaller, you have to follow all the documentations, and it was extremely taking effort and the time. Second challenge they were facing is that it takes a lot of time to deliver something. Sorry. आप पहले design करते हैं, analysis करते हैं, then you implement it, and then you test it, then you release it. So by that time, it can be around 2 to 3 years.
So that was the another challenge. The third challenge was that कि जब आपके पास इतनी heavy planning है, and then you have so much documentation to follow, and the brain power of the human being was not capitalized as it should be. So वहाँ से they were like 17 people, they started working together. उन्होंने कहा कि we need to become up something different. अच्छा, need कहाँ से बनी थी? वो ये थी कि things were changing very fast. ये है back in 2001 that the manifesto came to the being. उससे पहले भी all these kind of conversations were happening. So it wasn't that the first time they met and they came up with the manifesto और उन्होंने कहा सारी चीजें हो जाती. But it happened over the time. And remember, it was the market which was changing so rapidly. So if you have heard about Nokia, if you have heard about Kodak, and if you have heard about MySpace, all those companies that were quite big at that time, लेकिन उन्होंने अपनी जो market के लिहाज से adopt नहीं किया था. And what happened? They lost a lot of business. They couldn't follow up to the business agility mindset, और उसकी वजह से वो change हो गया. अच्छा, अब इसमें ये है कि the next thing is कि let's try to understand these aspects. अच्छा, I will be keep on asking you for your input, so don't expect me I will be talking all the time. अच्छा, आपको screen के ऊपर क्या नजर आ रहा है? कुछ आप explain कर सकते हैं? What do you see on the screen? Speed and accuracy. Speed. Okay. Sajid Speed said. and accuracy. Okay. Okay. So anyone else? Some indications that are telling you about some alarms, perhaps on these parking lights, Yeah. and a night Okay. vision of there's a camera view, perhaps. Yeah. तो अगर आपसे पूछूं कि गाड़ी अभी किस स्टेट में है, तो आप बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, गाड़ी किस स्टेट में है? The first or first gear. Stationary. Static. Startup हो चुकी है. Yeah, so it is idle. ठीक है, आपने स्पीड से अंदाजा लगा लिया, and even though the आपने वो RPM से अंदाजा लगा लिया कि the car is चल रही है लेकिन वो idle state में. Very nice. अच्छा, आपको ये डैशबोर्ड, अगर आपके पास गाड़ी हो लेकिन डैशबोर्ड ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? Then you have to drive on your gut feeling. Gut feeling. Maybe तो वो I'm going on this speed. Yeah. और gut feeling कितनी strong हो सकती है, कितनी accurate होगी? Of course, it won't be as accurate as having the dashboard in front of you. उस्मान तो लगता है अंदाजा ही होगा आपका based on your expert judgment, past experience. Exactly. अच्छा, ठीक है, you are right. I mean, I just wanted to bring the next picture in place. Not this one. This one. अब आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? What are your comments by looking at these two pictures? और अगर आप पहचान सकते हैं कि what are these two pictures? So one is for aeroplane, I think Boeing or something on the right side, and on the left side, even Tesla offers this. It's like kind of a space program from Elon Musk. Ah, exactly. So very right. On the left side, you see the Dragon SpaceX module, or right side there is from the NASA's Discovery shuttle. अच्छा, पॉइंट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम पीछे जाएं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको एक 4 चीजों की जरूरत होती है. ठीक है, आपको आरपीएम्स हैं, आपकी स्पीड है, कुछ इंडिकेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं. दैट्स गुड इनफ. ओके, लेकिन व्हेन यू गो इनटू द मोर कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको ज्यादा इनपुट वगैरह की जरूरत होती है कि जो आई मीन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, लेकिन वो जो राइट साइड पे है डिस्कवरी का, इट वाज एट दैट टाइम कि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एंड दे हैव टू हैव ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स इन प्लेस. और लेफ्ट साइड पे सिंस द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस सो मच, तो आप टच स्क्रीन के ऊपर वो लॉन्च करते हैं और आप शटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग वगैरह भी कर लेते हैं. एंड वेरी नाइस. शिफाक, लगता है आपने मेरा वो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट वाज माय सेगवे टू द नेक्स्ट पॉइंट, अबंडेंस ऑफ मैट्रिसेस. लेकिन रिमेंबर, matrices are not a bad things to have. Okay, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट नजर आ रही हैं, which is giving different kind of what you say indication, वो
वो आपको कहीं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाजमन दे रहे हैं। तो अगर आपने स्पेसशिप के अंदर कोई छोटा सा मॉड्यूल भी जगह भी इस्तेमाल करने, इट मीन्स कि आप वो देन यू विल यूज अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस कि यार ये चीज़ हमें दिखानी चाहिए कि नहीं है, सो दैट के जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, द नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की। ये कह सकते हैं कि 10 साल पुरानी बात हो गया। आई वाज वर्किंग विद एरिक्सन और वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती थी जिसके ऊपर लिटरली आई कैन से आई यूज्ड टू स्पेंड हाफ 6 नॉट 6 4 to 5 आवर्स की वो मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने में लग जाता था। आई हैव टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनी डिफरेंट सोर्सेज। और हुआ क्या कि वी यूज्ड टू स्पेंड दिस अ लॉट ऑफ टाइम। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दफा हमने सोचा कि यार इतनी हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, ये कोई देखता भी है कि नहीं। सो लेट्स पुट सम केपीआईज ऑन इट। हम इसके ऊपर कुछ मैट्रिसेस देख लेते हैं। और हमने मैट्रिक्स का किया कि वहां पे हमने एक यूज व्यू ऑन कर दिया कि कितने लोग इस रिपोर्ट को देखते हैं। एंड ट्रस्ट मी वो 5-6 लोगों से ज्यादा कोई नहीं देखता था। हुआ क्या कि फिर हम इतनी जो एफर्ट डॉक्यूमेंटेशन में पुट करते थे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही थी। That was just going into someone's inbox और वो लोग वहीं पे I don't know उसको आर्काइव कर देते होंगे या स्पैम कर देते होंगे। तो the point I'm trying to make here कि जो चीज़ें में आप let it be documentation, let it be planning, let it be measurement, you need to understand। और जो मेरी जो नेक्स्ट जो टाइम जो मैं स्पेंड करूँगा इट विल बी लेस अबाउट उन चीज़ों के बारे में एंड विल बी मोर अबाउट कि हमें वो चीज़ें क्यों करने चाहिए। And my whole mission is to give some different perspective कि उन चीज़ों की तरफ कैसे देखा जाए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। अच्छा, बर्न डाउन। अब एक और भी स्टोरी है। अब इसी तरह हम टीम्स में काम कर रहे थे और हम हमारी डेली स्क्रम होती थी बैक इन 2011-12 में की बात है। और उसमें हम बर्न डाउन यूज करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि एक बंदा आया, हम राउंड सर्कल कर रहे थे कि आई हैव बर्न हाफ डे, 1 डे, 1.5 डे। तो एक बंदे ने बोला कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया। एंड उस बंदे ने कोई डेज बर्न डाउन कर लिए थे। अब उसके बाद मेरी नेक्स्ट टर्न थी। अब मुझे लगा कि अगर मैंने हाफ डे कहा तो ये कितनी शर्म की बात होगी कि मैंने कल पूरा दिन काम करता रहूं एंड आई हैवंट डन एनीथिंग। तो मैंने भी थोड़ा सा सीधा तान के कह दिया कि मैंने भी एक दिन बर्न डाउन कर दिया। ठीक है। और उसके बाद मुझे ये ख्याल हुआ कि मुझे बाद में मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि अगर मैंने 1 डे कह भी दिया व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक। तो ये जो मैट्रिसेस वगैरह हैं, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये मैट्रिसेस यूजफुल तो हैं लेकिन हम ये क्यों यूज कर रहे हैं और ये किस लिए यूज होता है, इससे हम टीम की मोटिवेशन क्या बन रही है। तो हो क्या रहा था कि टीम के अंदर एक इंटरनल कंपटीशन पैदा हो गया कि वो बंदा कम बर्न डाउन कर रहा है, ये बंदा ज्यादा बर्न डाउन कर रहा है। तो वो फिर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच डेवलप होती जा रही थी और उसमें ये हुआ कि टीम को जो थी ना वो कोलैबोरेशन भी नहीं हो रही थी। अब मजे की एक और बात थी कि अगर किस दिन फॉर एग्जाम्पल कल का बर्न डाउन थोड़ा सा ठीक नहीं हो तो अगले दिन जो मैनेजर भी उसी रूम के अंदर खड़ा होता था। अब होता था कि अगर आपको मैनेजर वहां पे नजर आ गया ना तो इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। अब हम बर्न डाउन चार्ट हर रोज प्रिंट करके बोर्ड के ऊपर भी लगाते थे एज ए रिलीजियस एक्टिविटी। तो वो फिर हुआ क्या कि उससे मुझे एटलीस्ट आई रिफ्लेक्टेड कि दिस इज समथिंग इज गुड, इट्स फॉर द टीम एंड इट शुड बी बाय द टीम। लेकिन कई दफा ये होता है कि जो स्टोरी पॉइंट्स हैं और सबसे जो अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है वेलोसिटी, कि ये टीम की वेलोसिटी कम है, इस टीम की वेलोसिटी ज़्यादा है, ये अच्छे परफॉर्म करें या अच्छे परफॉर्म नहीं करें। तो उससे एक अच्छी जो चीज़ है वो इट्स बीइंग यूज्ड फॉर द टोटली रॉन्ग पर्पस। और जितने लोगों से मैंने बात की थी कि आई गॉट टू नो कि सम पीपल इन द लीडरशिप पोजीशन या मैनेजर वो इतने ऑब्सेस्ड है मैट्रिसेस के कि वो बंदे को देखते ही नहीं है। दे ओनली लुक कि यार ये वेलोसिटी क्या टीम की है। और उसी से नेक्स्ट कनेक्शन में आपको बताता हूँ कि आई हैव किड्स। तो जब गाड़ी पे रोड पे जा रहे होते थे जस्ट टू कीप देम बिजी
तो मैंने ये करना शुरू किया कि आई जस्ट टोल्ड देम कि यार आप साइंस वगैरह देखते रहो कि कौन कौन से साइंस वगैरह आ रहे हैं। अच्छा, एक दफा क्या हुआ कि हम मोटरवे पे जा रहे थे, इट वाज अराउंड 120 की स्पीड थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट स्टार्टेड ड्राइविंग अराउंड 40 और 45। तो पीछे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि स्पीड तो 120 है, आप 30-40 पे क्यों चल रहे हैं, ये तो बहुत स्लो है। तो उन्होंने रियलाइज नहीं किया बिकॉज दे वर सो मच फोकस्ड ऑन स्पीड, ऑन मेजरिंग सम गेटिंग सम नंबर्स, कि उन्होंने ये देखना, उनको नहीं पता चला कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि जो मैनेजर्स हैं दे आल्सो बिहेव लाइक किड्स, लेकिन बात ये है कि सम पीपल दे ओनली फोकस ऑन लिटिल बिट स्मॉलर एस्पेक्ट्स, और वो जो बाकी जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में हो रहा है उनको नहीं पता चलता। तो उन्होंने कहा कि यार 120 की स्पीड है, हम इतनी तेज जा रहे थे, यार रुक क्यों गए हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई आगे जो ट्रैफिक जैम है, आगे थोड़ी सी डाइवर्जन आई, तो मुझे स्लो डाउन होना है एंड आई नीड टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, गाड़ी ज्यादा क्यों है, तो आई डोंट वांट टू क्रैश इनटू समवन एल्स। ना अब ये जो सिचुएशन है, ये टीम वालों को तो पता होता है, लेकिन जो लोग मैट्रिसेस को देख रहे होते हैं शायद उनको नहीं पता होता, और यही जो है ना, इट कॉजेज ए ह्यूज प्रॉब्लम। और ये चीज एक मसला पैदा करती है टू डेवलप योर टीम कल्चर। ठीक है, क्या आप में से कोई इस सिचुएशन में हुआ है? आप एनीथिंग रेजोनेट विद यू विद दिस स्टोरी ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द टीम? Yeah, There have been so many instances. Okay, Please go ahead. let's go one by one. मुझे इंडिकेशन मिली थी, let's go one by one then, so we can get to hear everyone, right? Yeah, so who was first? Go ahead. I think मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी, बोलें। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा एक्चुअली होता ही है कि वेलोसिटी सस्टेन करने में ना, बाज़ का जो आपके कह लें कि प्रोडक्ट ओनर्स या स्पॉन्सर्स जो हैं, अगर आप कहीं पे आपको वेलोसिटी ज़्यादा करने, मतलब अपनी स्ट्रेच करने का मौका मिल भी रहा है ना, तो सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर। ठीक है, तो दिस इज जहाँ पे वो सोचते हैं कि अच्छा यार, आपने अगर 100 स्टोरी पॉइंट्स अचीव किए हैं और आपकी नॉर्मली वैसे 80 स्टोरी पॉइंट्स आप कर रहे हैं, देन दे वुड एक्सपेक्ट कि नहीं यार, आप आगे भी आप कर सकते हैं, आप आगे भी 100 ही के ऊपर चलें, बट circumstances can be changed due to any factor. It can be a new addition of team members or whatever, but they start expecting more. और एक क्वेश्चन जो है somehow एक रहता है कि नहीं यार, ये आई डोंट नो, इन्होंने एस्टिमेशन इन्फ्लेट तो नहीं की हुई, या एक वो एक ना एक कुछ डाउटफुलनेस रहती है, वो उसी वक्त क्लियर होती है जब आप अकम्प्लिश कर लें प्रोजेक्ट अपना इन टाइम, या व्हाटएवर जो भी सेट टाइमलाइंस हैं आपकी। अदरवाइज एक कहीं ना कहीं गैप जरूर रहता है। Yeah, thanks Umar for sharing. There was one more person who wanted to share. Yeah, I was just trying to say that इस किस्म की सिचुएशन में या इस किस्म के मैट्रिसेस में there is a lot of sweat and blood that we invest in and spend in. But the thing is कि आपके सारे मैट्रिसेस भी अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे वेलोसिटी पे एक स्टोरी पॉइंट्स भी बना रहे हो, but end of the day, if there is no input from the customer or you have a surprised customer end of the day, then ऐसे लगता है कि जैसे this was all fantasy or all fancy matrices that you had been showing up to the management and you were happy, everything was good, and then eventually you had to set up the war rooms. Set up what? So then you had to set up the war rooms just to fight the fire, हाँ, exactly, very very interesting point. यही है कि मसला ये होता है कि मैंने पहले भी कहा है, I'm not against any matrix or against any approach. होता ये है कि then we start looking at only these matrices. जैसे मैंने बच्चों वाली एग्जांपल दी, हम सराउंडिंग्स को भूल जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है which is very related to what first of all, thanks for sharing Umar and Amar. Shafaq has asked this, can you also clarify the role of these managers in an agile setup who has the power to manage team? Acha, very very interesting question. Acha, can you still see me? Hello? Yes, Yeah, can we see can you see still. Yes.
See you, but still. Okay, see you, but still, okay, I hope I come back. Yeah, okay. Let's continue, and if I'm not moving, then there's something wrong. अच्छा, अब ये है कि यही एक चैलेंज है कि जब वो आपकी ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, वो जो मैंने कहा था कि वो किसने कहा था, अगर गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड नहीं होगा तो वो गट फीलिंग से चलाते हैं, ठीक है। गाड़ी तो आप इस तरह चला सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, जब आप टीम के साथ काम कर रहे होंगे, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, यू डोंट ट्रस्ट देम, तो वो आपके ऊपर और ज्यादा मैट्रिसेस लगाएंगे कि इंडिविजुअल मैट्रिसेस लगाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, टीम की वेलोसिटी कैसी है, इनका बर्न डाउन वगैरह कैसे चल रहा है, और वो उस तरह चीजें बनती जाएंगी। और उसमें ये काफी क्वेश्चन है। डू यू स्टिल सी मी और नॉट? जस्ट टू चेक। हेलो? We see you stand still. Okay, stand still. Okay, then I need to move myself to the other camera. Yeah, it's technology, right? Okay, let's see if it works. Give me a minute. Okay, let me switch the. Now we can see you. Yeah. It's okay. Yes, We see yes. you moving. We see you moving. Yeah. Okay, perfect. अच्छा, मैनेजर्स की ये है कि जब मैनेजर्स, देखिए अब ये ह्यूमन नेचर के अंदर ये चीज को समझने की कोशिश करें कि हम चीजों को माइक्रो मैनेज कब करते हैं, जब हमें आइदर वी हैव कम्प्लेक्सिटी के हम अगर हर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो चीजें होंगी नहीं, या दूसरा ये हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ काम करें, जिस टीम के साथ काम करें, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, राइट? तो जब तक ये चीजें हैं, दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई विल बी टॉकिंग मोर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स एक्चुअली, कि जब तक आई वर्क एज ए टीम कोच, लेकिन जब तक आप टीम के अंदर कल्चर को फोकस नहीं करेंगे, चाहे आप उनके ऊपर ड्रैगन एक्स के मैट्रिसेस लगा दें, डिस्कवरी शटल के मैट्रिसेस लगा दें, वो बहाने बन जाते हैं। वो चीजें सिर्फ शाइनिंग करने के लिए इट कैन बी डन, कि अगर एक काम जो होता है एक दिन के अंदर होना है, उसको बता दो एक हफ्ते में होगा, तो होता यह है कि देन इट्स नॉट ए पॉजिटिव टीम कल्चर। एंड द क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम देयर, जहां पे आप सिर्फ चीजें कवर अप वगैरह करने के लिए करते हैं, एंड नथिंग इज हैपनिंग इन प्रैक्टिस। अच्छा, तो अभी कुछ लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं कि कुछ लोग वेलोसिटी यूज नहीं करते। आई स्टॉप यूजिंग वेलोसिटी लॉन्ग टाइम अगो। जब मुझे ये बर्न डाउन वाला एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कहा ये तो स्क्रैप करो इस आइडिया को, ये तो मुझे अगर नेक्स्ट टाइम से 5 दिन बर्न कर दिए, मैं कैसे करूंगा बर्न? तो मैंने इस आइडिया को बर्न कर दिया कि भाई वेलोसिटी से ना जान छुड़ाएं। अच्छा, फिर इसके साथ ही जो एसोसिएट इसकी जो सिस्टर है वो है एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन के ऊपर भी होता है कि अच्छा हमें बताएं कि ये कितनी देर में होगा। तो मैंने भी एस्टिमेशन का भी वो इसके साथ ही आइडिया स्क्रैप कर दिया, और एस्टिमेशन को मैंने ये यूज किया कि जो प्लानिंग पोकर टेक्निक है उसको यूज करके हमने सिर्फ उसको ये किया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बताता है कि ये 1 है, दूसरा कहता है 8 है, तो देन आई हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, आप बताओ ये 1 क्यों है और आप बताओ ये 8 क्यों है। ताकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, हम शेयर अंडरस्टैंडिंग बना कर सकें कि भाई ये नॉलेज क्या है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर आपकी टीम के अंदर ये इन्वायरमेंट नहीं है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की और एज ए टीम काम करने की, तो मैं आपको एज ए मैसेज रिकॉर्ड लिख के दे सकता हूँ कि यू कैन हैव द बेस्ट फ्रेमवर्क इन द होल वर्ल्ड। अगर आप टीम की तरह काम नहीं कर रहे तो इट्स यूजलेस, इट्स टोटली यूजलेस। अगर आपकी टीम कल्चर में ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इस हैंड तक कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब ये है कि मैं आपको एक छोटा सा क्लिप चलाना चाहता हूँ, एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन हियर दिस साउंड। साइलेंटली सुने इसको, एंड देन विल हैव अ डीब्रीफ ऑन इट। Department. Yes, ma'am. Now, the candy will pay. आपको आवाज आ रही थी कि नहीं? Yep. ओके, मैं चेक किया था कि आपको आवाज है। अच्छा, मैं अभी ऑन करता हूँ, तो फिर लेट्स इस 2.5 minutes वीडियो, लेट्स सी इट। Pass by on this conveyor belt and continue into the next room where the girls will pack it.
Now your job is to take each piece of candy and wrap it in one of these papers and then put it back on the belt. You understand? Yes, sir. Yes, ma'am. Let her roll! Where else do you want to go? Let her roll! Wait here. Somebody's asleep at the switch. Bookkeeper or secretary or What are you doing up here? I thought you were downstairs boxing chocolates. Oh, they kicked me out of there fast. Why? I kept pinching them to see what kind they were. that's it. The fourth department I've been in. Well, I didn't do so well either. All right, girls. Now this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll! Oh, this is easier. Yeah, we can handle it, okay? Listen, that's all. I think this. Right there. By the way, Forum, the video is not smooth for me. It's like in जी क्या हुआ? video is not smooth for me. It's like breaking, and it's I don't know. It's only for me or others as well. Okay, so what I can do is to give a link in the chat, and please watch it, and then we can have a conversation. Yes, ma'am. Now the candy will pass by on this Also, conveyor the belt same issue as well. to the next room where the girls will. Sorry. I was having the same issue. This, the Okay. video is quite long. No worries. I have shared the link in the chat. Please, please watch it on your own side. We can give it 1 minute. We don't need to watch the whole thing. All right, thank you. But please do watch. Hello, Assalamu alaikum. Sound is very much unclear. So it might be streaming, but it should be playing very smooth because it's on the YouTube. It's an old video. But how many of you have been able to watch it? Try to watch it just a bit. It's about a manager giving a task to the ladies to pack up the candies, which is coming on the conveyor belt. So Yes. yeah. Yes. So let's try to debrief it, and you can take the learnings with you, and you can always watch it afterwards. I think it will be very easy to relate as well. Ahmed, you want to add something? A lot, you can say. Yeah. So in a takeaway, what has been your observation from the clip? I think transparency, that was the first thing. It was like a micromanagement. Okay, micromanagement from Amir, and another Amir is transparency. Yeah, micromanagement. Yeah, you both are Amir actually, so I'm referring to one of Yeah, you. so I forgot like whom you What is that? Yeah, so in a nutshell, what is happening there?
And I think this is, if I have to summarize the whole conversation, this is a nice one. So what is happening is that two people are just standing there. They are given some instructions and they have to put some candies in the wrapper, right? So in the start, it was so simple. They had a low velocity, but with the passage of the time, the things became overwhelmed, right? So what they had to do is to just do some other tricks to get rid of the work. And then the manager comes in and says, everything is working so fine, so fine, and let's increase the velocity. So this is actually what is happening perhaps in your teams or organizations as well, that what is happening is the overall system view is lacking. The manager, the lady, has to be on one place to fix this team and then have to go to another team on the conveyor belt to fix another team. So there is one person who is making all the decisions without even getting any input from the people who are close to the work, right? So if they if there's no input, then it means that you don't care about I mean, I would say you don't care about the work, but your focus is more on, okay, get the things done. Yeah. There's a comment, manager should be a servant leader, not a boss, otherwise employee will not do their best work. Exactly. So the whole purpose of the manager, I would say that from the traditional to the agile, I think they can add a huge value when they can change their mindset. So instead of micromanaging people, they can be more close to the people and try to understand what their challenges are and then help them. However, unfortunately, if we take context not only from the Pakistan, people become very concerned about losing their position. The people can become very concerned about losing their power or influence. And that's the problem which can cause a lot of issues. So if you have that kind of a team culture, then it's a problem. I don't know what will work there. There will always be excuses. There will always be conversation on your performance review. There will be always conversation on the velocity because the mindset to take is not there. So the next one, let me, and the question is, I think I missed one slide that I want to bring up. Yeah, exactly. So this is the next slide that I want to bring up. So I don't want to cover all the industrial ages. If you search on the 4 revolutions, industrial revolution, you can find a lot of information. But there are 2 key things that I want to emphasize. The one is like from the past 1 century, there was more focus on task-oriented work. Okay, if this is a pen and it has different components, let's take this one. Okay, this has different components. I put this and you put this one, and then this is a product. There is no rocket science behind it. Okay, so what I have been doing is it's the task-oriented work. You can look into manufacturing. You can look into the factories. यहाँ से चीज उठा के यहाँ पे रखनी है, and then you have to put it here. इसमें brain power ज़्यादा use करने की जरूरत नहीं है. And that's the term where management came, or manager came. If I'm not mistaken, that's kind of Italian or around that language. It means that to manage some horses, to take care of the horses, because people are considered as resources कि उनसे ये काम लेना है. We don't need their wisdom. जो मैं कह दूंगा, you just need to do. And this is one of the challenge. If their people are not thinking for themselves, then आप वो सिर्फ जो बंदा कहेगा वो आप करेंगे. And unfortunately, I have seen some behavior like कि लोगों को they don't want to think for themselves. कि अगर एक product बनानी है, तो what are the different things that I can do? मैं distributed teams के साथ काम कर रहा था. Sorry. तो उसमें एक जो challenges था, which I have to discuss with the executive, कि we were asking, हाँ भाई आपकी क्या राय है? How we can build this best product? And there was no input. उन्होंने ये कहा कि आप हमें बता दें कि करना क्या है, वो हम कर देंगे. So वो हो क्या रहा था? They were considering themselves more of a resource. तो उसमें the next concept I will talk is more on the resource and flow efficiency. लेकिन briefly summarizing इसको करना चाहता, the next stage, अभी वाली the next stage which is happening, it's about knowledge workers. All the innovation which is happening in the product or IT, it requires wisdom. Software develop करना है, you
you are not asked कि आपने ये function लगा देना, ये function लगा देना. You have to think, you have to use your brain power कि हम इस feature को कितना accessible बना सकते हैं, कितना easy बना सकते हैं. I mean, Apple puts a lot of money into research and development कि simple interfaces के साथ कैसे काम करना है. And some of the things that I'm currently working at PayPal, तो हम जो चीजें करते हैं, we spend a really good amount of time कि हमने इन चीजों का flow कैसे बनाना है. We even spend months on it कि यूजर को कम से कम क्लिक कैसे करने पड़ेंगे. और उसके लिए sorry, और उसके लिए you need to have people जो कि सोचना चाहते हैं. अगर आप इस जो next level में successful होना चाहते हैं, if you want to grow yourself, then start thinking on how to think and how to learn. और अब next मैं मूव जो करना हूँ ये है कि let me yes, life is short. Question. Hello. Oh, any question, Murtaza? Yes. Go ahead. ये रिस्क एनालिसिस भी तो होनी चाहिए ना कि पैन अगर आपने बना लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, और आपने ये पैन बना लिया, अगर मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ बायॉन्ड द मतलब बाउंड्रीज भी तो देखना चाहिए कि लेट्स से कि अब एक आपने प्रोडक्ट बना लिया मार्कर, अगर अब हम जो है इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जूम मीटिंग्स, और इसके बाद तो फिर ये मार्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इनपुट भी तो देना जरूरी है रिस्क के लिए. हाँ, exactly. मुर्तजा आपने जो पॉइंट किया वो I totally agree with that. और जो स्लाइड सॉरी जो नेक्स्ट स्लाइड में शो करना चाह रहा हूँ, आपके पॉइंट से मैं कनेक्ट करूंगा. तो लाइफ इज शॉर्ट, डू स्टफ दैट मैटर्स. मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने स्पेसिफिकली आई मीन आई हैव टॉक्ड विद मेनी अदर पीपल, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से लोगों से बात करता हूँ, they struggle with coming with some ideas. I mean, I'm not picking anyone up, लेकिन होता ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन, आई माइट बी रॉन्ग, तो हमेशा ये स्ट्रगल होती है कि हमें बता दिया जाए हम ये कर लेंगे. सॉरी, मतलब लोग इसी फलसफे के ऊपर स्टिक है कि माइट इज राइट, बट जो जिस लकड़ी से आपको हाका जा रहा है, ट्रक की लाइट के पीछे चलना है आपको. हाँ, लेकिन यही अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी टीम्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव बनाना चाहते हैं, हैव सम काइंड ऑफ फेलियर और लर्निंग कि आप उनको चीज को कैसे करेंगे. वरना मैं बताता हूँ कि मुझे इट्स ह्यूज चैलेंज. लोग जो हैं वो आपको हायर इसलिए नहीं करेंगे कि आप एक एक्सेल शीट के ऊपर +1 वेरी डिफिकल्ट कि आप नेक्स्ट ग्रोथ में कैसे आ सकते हैं. इन ए नटशेल में पॉइंट, या गो अहेड. ये इनिशियली इस तौर पे आपको स्कोप के अंदर, हमें स्कोप के अंदर डिफाइन करना चाहिए ना. स्कोप जब हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो उस वक्त हमें मतलब यानी कि जो भी आपका देखें, 2 तरह की टीम्स होंगी जब हम टास्क डिफाइन कर रहे होंगे. तो एक एक्सपीरियंस टीम होगी कि हम ये who already worked on the project, और एक टीम होगी जो इनएक्सपीरियंस होगी. ऑब्वियसली मतलब 5 fingers are not equal. एग्जैक्टली. तो हमें उनसे इनपुट लेना चाहिए कि यार ये आप इसका ओपिनियन क्या ले रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है. इसके इट शुड बी डिफाइंड इन द स्कोप. एग्जैक्टली मुर्तजा. और आपने कितनी दफा ये होते देखा है? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए ना. लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी दफा आपने जो जूनियर्स लोगों से इनपुट लिया है, एनीवन इन द टीम, रूम इज ओपन, हाउ मेनी टाइम्स, रिफाइनमेंट में, प्लानिंग में, डिस्कशन में? मैंने लिया. दैट्स गुड. बाकी लोगों से भी देखते हैं. एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक के इलेक्ट्रिक से है. अब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है. अब मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे मीटर आउटसाइड द, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, मतलब इससे कोई ऑफिशियली नॉट ए स्टेटमेंट. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब मुझे ये काम करना है ना कि मीटर मुझे आउटसाइड द प्रीमिसेस लेके आना है, ठीक है. ऑन वर्क मतलब ऑन पेपर इट्स वेरी गुड, मतलब ऑल थिंग्स आर
लेकिन जब तक आप वो लाइनमैन से और वो जो कारकुन है आपका, जो भी आपको ग्राउंड के ऊपर जो काम कर रहा है, जब तक आप उससे वो इनपुट नहीं लोगे, तब तक अब वो इनपुट्स क्या होंगे? वो इनपुट्स ये होंगे कि भाई पीपल विल रिजेक्ट टू चेंज द मीटर, तो उसकी वजह से आपकी टाइम कितना एलेबरेट होगा, मतलब यानी टाइम कितना आपका कंज्यूम होगा। तो दैट मस्ट बी टू टेक द इनपुट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एज वेल। एग्जैक्टली। तो मैं जब भी मेरी कन्वर्सेशंस होती हैं, दिस इज द पॉइंट आई ट्राई टू एम्फसाइज कि लोगों को उनकी एज या टाइटल से ना जज करें, have a conversation with them, उनकी विजडम को यूज करें, एंड दैट इज समथिंग दैट आई विल कम नेक्स्ट। और इस स्लाइड का मकसद ये था कि जस्ट डू ए सेल्फ रिफ्लेक्शन कि जो काम आप कर रहे हैं, इज इट रियली एडिंग वैल्यू टू योर एक्सपीरियंस, या एक ये है कि टाइम पास हो रहा है। आई हैव डन दैट अ लॉट एक्चुअली, और उससे ये है कि नुकसान ये हुआ है कि इट वाजंट वेरी यूजफुल। अच्छा, नेक्स्ट है, आई गॉट ए इंडिकेशन रिसोर्स एफिशिएंसी और फ्लो एफिशिएंसी के जो कॉन्सेप्ट, एनीवन फेमिलियर विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स? रिसोर्स एफिशिएंसी और फ्लो एफिशिएंसी। ओके, आई कैन एक्सप्लेन। रिसोर्स एफिशिएंसी ये है कि आपने एक चीज को, जैसे सीपीयू है, उसको 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी का आरपीएम 8 तक पहुंचा हुआ है गाड़ी की स्पीड 250 तक गई हुई है, और बंदे को आपने आइडल नहीं देखना। जैसे जो तो फारिग बैठे हो, तो इस तरह का ये डॉक्यूमेंटेशन कर दो अच्छा फारिग बैठे हो, अच्छा ये कर दो। व्हाट इज हैपनिंग कि वो जो बंदा है, जो रिस्पॉन्सिबल, जो मैनेजर है, वो किसी को फारिग बैठने नहीं दे सकता। वो कहता है कि इसको बंदे को यूज करके रखो, ठीक है। और अच्छा और कोई काम नहीं है, स्प्रिंट में कम स्टोरीज हैं, अच्छा इस तरह करो, या वो साथ वाली टीम के डॉक्यूमेंटेशन करनी थी या कोई रिपोर्ट में थी, तुम लोग कर लो, लेकिन फारिग नहीं बैठना, ठीक है। और फ्लो एफिशिएंसी ये है कि आप ये एम्फेसाइज करते हैं कि अगर आपके पास कस्टमर आया या फीचर आया, तो आप उसको कैसे करेंगे कि ये चीज कम से कम टाइम में हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर आपके पास एक फीचर आया है, रिसोर्स एफिशिएंसी में देखेंगे तो पहले रिक्वायरमेंट वाले के पास जाएगा, फिर डिजाइन वाले के पास जाएगा, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर रिलीज होगी, और तब तक कोविड आ चुका होगा और मार्केट चेंज, ठीक है। फ्लो एफिशिएंसी में है कि ये छोटा सा फीचर है, लेस डिजाइनर, टेस्टर, डेवलपर जो भी हैं, हम एक छोटी सी टीम बना लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू डू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ एमवीपी। अगर आपने एक बुक पढ़नी है, एरिक रीस की है, लीन स्टार्टअप की, वेरी नाइस बुक। इस कॉन्सेप्ट ऑन के आप छोटी सी साइकिल्स के ऊपर कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज ब्रीफ। आई हाईली रिकमेंड कि ये एक अच्छी बुक है, दिस इज लीन बाय निकोलस मोडिज। This was my very first book that I read back in 2010, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार I need to do certain things differently in my work. अच्छा, मुझे I have to resource efficiency, और इसके कुछ different layers हैं। For example, जो resource efficiency है, उसमें जो goal होता है कि इस बंदे को 9 to 5 सब कुछ काम पे लगा कर रखना है, इसको सोचने नहीं देना। Let's try to use this resource as much as possible, ब्रेक्स भी नहीं, सिगरेट की भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ काम करते रहो। आई थिंक विच इज नॉट गुड। और फ्लो एफिशिएंसी में होता है कि यार हमारी नीड्स क्या हैं। अगर कोई बंदा फारिग बैठा हुआ है, उसने टेस्ट वगैरह कर लिया है, तो उसके बाद द पर्सन कैन वेट, और नेक्स्ट चीज क्या है, लेकिन जब उसकी जरूरत होगी तो आप वहां पे होंगे, राइट। नेक्स्ट इज फोकस। क्या है फोकस? ये है कि हमने इस रिसोर्स के ऊपर फोकस है कि जो हमने मैक्सिमम इस यूटिलाइजेशन करनी है कि सीपीयू है, तो अगर उसमें 32 GB की कैपेसिटी है, तो हमने 32 GB यूज करनी है। अगर सीपीयू 100 है तो 100% यूज करना है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी इतनी सीपीयू की और मेमोरी की कंजप्शन होगी, तो आप क्या एक और ब्राउजर का टैब खोल सकते हैं? जो आप काम ऑलरेडी कर रहे होंगे वही स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर आप इसको ह्यूमन एलिमेंट पे देखें, अगर हम इतनी कंसिस्टेंटली से काम करें, तो मसला ये होगा कि देन यू विल लूज योर फोकस, और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि अपनी सोचने की पावर खत्म हो जाएगी। देन व्हाट हैपेंस, यू बर्न आउट, और जो लोग आपको कहेंगे वही करेंगे। ऑन द अदर हैंड, फ्लो एफिशिएंसीज की यार कस्टमर के साथ देखा जाए, यार आपकी नीड क्या है, टीम के साथ देखा जाए कि अगर अच्छा ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो वो क्या मेजर करना चाहते हैं,
और वेलोसिटी का ये जो पॉइंट है, अच्छा वेलोसिटी अगर आप करना चाहते हैं, एस्टिमेशन करना चाहते हैं, आई एज ए मैनेजर हैव नथिंग टू डू इट, आप लोग करें और देखेंगे आप अपनी कैसे करना चाहते हैं. सो यू फोकस मोर ऑन देयर नीड्स रादर देन माय नीड, कि मैंने ऊपर बॉस को बताना है कि ये टीम ने कितनी वेलोसिटी बर्न डाउन कर लिया. ठीक है जी. द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. देखें, अगर आपके पास लोगों को फुल यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास साइलोज बन जाएंगे. एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो आप उसको आइलैंड्स की शेप में दे रहे हैं, आप उसके एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहे. ऑन द अदर हैंड फ्लो एफिशिएंसी में ये होता है कि आपके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं और उनका फोकस ये होता है कि हमने ये जो हमारा जो कस्टमर है, ये जो नया फीचर है, हमने इसको रिलीज कैसे करना है. और इसकी मैं एग्जांपल लास्ट में मैं एक एग्जांपल दूंगा कॉम्पिटेंसी के. अगर कोई बंदा टेस्टर है तो हमने उसको फुली टेस्टिंग के लिए यूज करना है, अगर कोई डेवलपर है तो फुली डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, और अगर कोई जो रिक्वायरमेंट वाला बंदा है तो फुली रिक्वायरमेंट के लिए यूज करना है. तो वो आप स्पेशलिस्ट बना देते हैं. ऑन द अदर हैंड आप व्हाट यू नीड टू डू इज टू बिल्ड मोर ऑफ अ डिफरेंट कॉम्पिटेंसी. अच्छा, जो राइट हैंड वाला फ्लो एफिशिएंसी, यू माइट रिकॉग्नाइज इट एज ए क्रॉस फंक्शनल टीम्स, राइट, कि आपके पास वो सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज हैं और जो आपके पास टीम में है, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग कि आप उसको यूज करना चाहते हैं कि टू डिलीवर द वैल्यू. इज इट मेकिंग एनी सेंस? थम्स अप, थम्स डाउन. क्या कुछ चीजें रेजोनेट कर रही हैं आपके इस एक्सप्लेनेशन से? It makes a lot of sense with flow efficiency. Yeah. Sorry? It makes a lot of sense when we are talking about flow efficiency versus resource efficiency. हाँ. तो ये है कि आप अपने आप को देखें, पुट योरसेल्फ इनटू द इमेज कि आप ये लेफ्ट साइड रिसोर्स एफिशिएंसी के मोड पे काम कर रहे हैं या आप फ्लो एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं. मेरी सजेशन ये होगी कि रिसोर्स एफिशिएंसी में है, लेकिन मेरी आपसे हमदर्दी तौर पे रिक्वेस्ट होगी कि ट्राई टू मूव मोर टुवर्ड फ्लो एफिशिएंसी और नई चीजें सीखने की कोशिश करें, वरना आप जहां पे हैं अनफॉर्चुनेटली इट्स ए हार्श रियलिटी, वहीं पे रह जाएंगे. अच्छा खुरम, इसमें सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, इसमें आप एक नया मॉडल भी आजकल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें रिसोर्स एफिशिएंसी के फर्स्ट 2 पॉइंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं और फ्लो एफिशिएंसी के लास्ट 2 पॉइंट्स भी है. ठीक है. हाँ, हम एक थर्ड मॉडल की तरफ चले गए हैं. हाँ हाँ, इसमें ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन कि आप टीम और ऑर्गेनाइजेशन कैसे वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं. लेकिन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हैव दिस कन्वर्सेशन इन योर टीम, हैव योर कन्वर्सेशन विद द मैनेजर और जो भी लोग लीडरशिप पोजीशन पे हैं कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं. ठीक है. So now I have been given some time indication. I just want to ये है, this is lean book. I highly recommend कि आप इसको देखें. Next point is हाँ, I think I can come to this one. So जो भी आप planning, documentation, जितनी भी चीजें कर रहे हैं, this is a kind of a 5-step model कि आपने प्लानिंग करनी है तो क्यों करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है तो क्यों लिखनी है, मैट्रिसेस मेजरमेंट करनी है तो क्यों करनी है, उसमें आपको क्या वैल्यू में देखिए. अच्छा, आपने अगर कोई चीज मेजरमेंट करनी है, लेट इट बी बर्न्ड ऑन चार्ट्स, लेट इट बी CFDs, लेट इट बी एस्टिमेशन, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे. और उसके बाद अगर आपने मेजर कर लिया तो उसको यूज कौन कर रहा है, क्या ये टीम के लिए है, क्या ये मैनेजमेंट के लिए है, क्या ये लीडरशिप के लिए है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. और उसके बाद आप करें कि इसको यूज कैसे किया जाएगा, क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी रेडिएटर जा रहा है 60 पे, अच्छा मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरी गाड़ी अभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन अगर कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं कि भाई इंजन को चेक कर लें, इंजन ऑयल कम है, इसका मतलब है मुझे उसके ऊपर एक्ट करना है, मुझे गाड़ी को रोकने और देखने के क्या मसले हो रहे हैं. अगर टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, टीम अपने जो स्प्रिंट गोल को मिस कर रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि देयर इज सम डिसफंक्शन व्हिच आर गोइंग इनसाइड द टीम, जिसको ऊपर आपने एड्रेस करना है. लेकिन मेरे आपको आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी मैट्रिसेस कर रहे हैं, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन जो भी हैं, अपने टाइम में सोने से पहले ये देखें, इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें और देखें कि वेयर डू यू स्टैंड एंड व्हाट एग्जैक्टली समथिंग यू आर ट्राइंग टू अनलॉक. क्या आप एक रैट रेस में हैं या आप एक वो डेली की रूटीन के अंदर फंसे हुए हैं, सुबह जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, ये काम करेंगे,
आपकी अपनी जिंदगी में इनोवेशन क्या हो रही है, व्हाट इज समथिंग डिफरेंट दैट यू आर डूइंग, जो आप चीजें कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड देम और नॉट। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हैं, जो मैंने पहले अपनी स्टोरी शेयर की थी, तो आप उसको, यानी कि ये मकसद क्या है इस चीज का, बिफोर क्वेश्चनिंग समवन एल्स, खुद बैठ के ये क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें, एंड देन इफ पॉसिबल अपनी टीम के साथ डिस्कस करें कि यार ये जो क्वेश्चन थे कहीं से मैंने सुने थे और मैं ये किस पे कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, मेक सेंस और नॉट, हिम्मत पड़ रही है करने की कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि अभी मैं इसको इसको जी मैंने सिंपल एग्जांपल्स दी थी कि फॉर एग्जांपल आप वर्क इन प्रोग्रेस को मेजर करना चाहते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस का फोकस ये है कि आप अपनी डिलीवरीज को फास्टर करना चाहते हैं, आप ये स्टार्ट, आप बहुत सारी चीजें एक के अंदर नहीं रखना चाहते हैं, आप 10 टास्क स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, आप 3 स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको फिनिश करना चाहते हैं, क्या आप फोकस करना चाहते हैं। और साइकिल टाइम और लीड टाइम, कि आप देखना चाहते हैं कि यार जब कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है तब से लेके जब हम उसको डिलीवर करते हैं ये कितना लीड टाइम बन जाता है, इज इट इन वीक्स, मंथ्स, ईयर्स के कितना है। और अगर हमारे पास टीम के अंदर एक काम आता है तो हम उसको एज ए टीम कितनी देर में कर पाते हैं, और वेलोसिटी और रिपोर्ट्स का। लेकिन इसमें जितने भी मैट्रिसेस आप जो भी यूज करेंगे, द की थिंग इज कि आप उस आपका टीम कल्चर कैसा है, कि आप इन चीजों को कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे परसीव करेंगे। अगर वो यही है कि भाई हमें सिर्फ रिपोर्ट करना है क्योंकि मैनेजर के साथ मेरी नेक्स्ट मंथ मेरी परफॉर्मेंस रिव्यू है, और अगर उसको मैंने क्वेश्चन किया और या उसको मैंने ना किया तो मेरी तो सैलरी नहीं बढ़नी, अगर इस तरह की चीजें हैं देन इट्स ए चैलेंजिंग। तो आप खुद अपने आप को सेल्फ असेस करें कि आप कहाँ पे हैं एंड वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 1 to 2 years। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आंसर नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद तौर पे अपने आप तौर पे देख सकते हैं कि आप क्या इन चीज़ों पे करना चाहते हैं। तो ये था एक क्विकली वही फिर जो मैं स्टार्ट में बोला था कि आई डिड नॉट वांट टू गो थ्रू ईच मैट्रिक्स या प्लानिंग, और के मेरी वीडियो दोबारा स्टक हो गई शायद। ओके, लेट्स चेंज इट, लेट्स अडॉप्ट। अच्छा, यस परफेक्ट, नाउ यू सी। तो जो बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम चीज़ों को कई दफ़ा सिर्फ करते हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं है, समझते नहीं है। तो बजाय मैं आपको मेरे सारे मैट्रिसेस को बताऊँ, ये वेलोसिटी है, ये WVPI प्रोग्रेस का है, ये है, मेरी इंटेंशन ये थी कि एक डिफरेंट थिंकिंग दी जाए कि आप लोग इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और अपने काम के अंदर इसको कैसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। और ये यानी कि इस कुड बी ए काइंड ऑफ ए कन्वर्सेशन स्टार्टर। और last but not the least, as a part of the initiative, we are also doing the trainings, and it also includes a coaching perspective. There is one other training I'm doing with another trainer from Sweden in March, and it's around the Certified Scrum Master. And if there is something that you want to attend, right now it's on a really good price. Just use this PK Agile LHR code, and then you can get a good discount. तो इसमें ये है कि this is just an offer if it could be beneficial for you. And the last but not the least, thank you very much. आप लोग किसी और जगह पे भी कुछ काम कर रहे हो सकते थे, लेकिन आपने प्रेफर किया कि just to be here and learn something different. So नुमान साहब, do you have like 5 minutes कि हम लोगों के जो questions हैं उनको आंसर कर सकें, क्या कहते हैं आप? अगर आप बोल रहे हैं then you are muted. कैमरा ऑन कराने की मेरी इंटेंशन ये थी कि ये नहीं थी कि लोग वहां पे हैं कि नहीं, लेकिन इट्स मोर ऑफ विजुअल कनेक्शन। नुमान साहब आप हैं उधर कि नहीं? अच्छा चलिए, नेवरदलेस जब तक वो नुमान साहब आते हैं, दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं। Yes, I am here. Basically, I got busy. Yeah. So तो हमारे
5 मिनट हैं कि हम एंटरटेन कर सकें, क्वेश्चंस आंसर से कमेंट सुन सकें इनके। Okay. Before that, if everyone can turn on their camera so I can take a picture. जी कंगी शंगी कर लें, इट्स पिक्चर टाइम। और लुक गुड, आप ऑलरेडी अच्छे लग रहे हैं। शाहिद, आमिर, साजिद, सज्जाद साहब, फुरकान, शहरियार, guys. सॉरी सर, मैं नहीं कर सकता इस वक्त वीडियो। देखो थम्स अप बनाने हैं, किस तरह की पिक्चर्स आप लेना चाहते हैं, कुछ इस तरह करना है? उस्मान असलम, ये उस्मान असलम with us as well. सर मेरी तरफ से मदद होगी एक्चुअली। Okay. Let me check. Varun, I would like to ask, Thank you guys. what sort of speaking challenge that you might have faced while doing any transformation to any organization? जी पूछें, we do have some time, or just to mention I have shared my connection address जो भी है, I'm more than happy to help you guys afterward. The main purpose के कुछ चीजें ट्रिगर हों, कोई नई सोच का जो है ना वो चिराग जो है ना वो जले। नई उम्मीदें हैं, यानी कि think differently, and I'm more than happy to help. Just reach out to me and I can listen. Oh no, this is a time for the questions. I think हमारे पास 5-6-7 मिनट हैं जब तक नुमान साहब कहते हैं, वरना उसके बाद हमें जाना पड़ेगा। I'm available. जी आमिर, please go ahead. Yeah, my question was कि आपने being a coach काफी सारी agile transformation lead की। Do you hear me? Am I audible? Yes. Yes. My question is कि since you have been into this profession, can I go ahead? Yeah. Go ahead. Yeah. Amir? Okay, my question was with regards to the agile transformation in any organization. So what sort of challenges that you have faced and how did you deal with that? ओह, इसके लिए तो मुझे लगता है एक नेक्स्ट 2 दिन इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, I've been doing it for so many teams, और रिमोट भी हैं, ऑनलाइन भी है, and trust me, हर टीम और हर ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस डिफरेंट थे। मैं जो सबसे कॉमन जो चैलेंज बता सकता हूँ, जिसके मुझे सबसे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है जब भी मैं टीम किसी के जाता हूँ या ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें आपका रोल क्या है। आर यू स्क्रम मास्टर, आर यू प्रोडक्ट ओनर? मेरा जो रोल था एज ए काइंड ऑफ ए टीम कोच और एजाइल कोच था, तो मुझे उसमें सबसे बड़ा जो चीजें देखनी होती थी कि हाउ आर द डिफरेंट पीपल, लोग क्या हैं। फ्रेमवर्क की है, फ्रेमवर्क की बात आप समझें बहुत बाद में आती है। मेरी जो जहाँ पे मैं काम शुरू करता हूँ, फ्रेमवर्क बहुत बाद में आते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को समझें, आप जिन लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं उनको समझें कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, वो किन चीज़ों के ऊपर कंफर्टेबल हैं, किन चीज़ों के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। वो एक पहला लेवल आ जाता है इंडिविजुअल। उसके बाद आप देखें कि टीम कैसे काम कर रही है, टीम कैसे फंक्शन कर रही है, क्या लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, क्या हॉलवे की गॉसिप्स चल रही हैं, या जब एक सिगरेट पीने बाहर जाता है तो क्या डिस्कशंस होती हैं। ये वो चीज़ें हैं कि आपने मुख्तलिफ लोगों की जो सोच है उनको इकट्ठा लेके आना है। और अगर आप मेरे पीछे जो देखेंगे जिन मैं करता हूँ वो वैल्यूज़ के थ्रू करता हूँ, कि जो टीम की वैल्यूज़ क्या हैं। आप अगर 5-6 बंदों को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो आप उनको कैसे टीम कल्चर, हमें अभी आपने अगर मेरी टॉक में नोट किया होगा, जो मैट्रिसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग है, ट्रस्ट मी ये कल हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके वो जो लोग हैं आपस में काम नहीं करना चाहते हैं तो वो आपके एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में भी नहीं होगी। एंड दिस इज आल्सो आई कैन गिव यू इन रिटर्न। जो बहुत सारे जो चैलेंजेस मैंने देखा अमर, जो नटशेल लोग डायरेक्टली फ्रेमवर्क्स पे जंप करते हैं कि स्क्रम इज द बेस्ट स्क्रम, चलो अब आप सब लोगों को स्क्रम फॉलो करना है, और जिसने फॉलो नहीं किया मसला है।
मेरी जो टेक वे होगी, अंडरस्टैंड द पीपल फर्स्ट। आइसबर्ग, अगर आप आइसबर्ग को देखें ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो है फ्रेमवर्क्स का, जो नीचे सबसे बड़ा हिस्सा है ना वो है लोग। Yeah, I hope that answers your question, Amit. You're muted if Yeah, you're. you did. You did. Yeah, okay. Any other question or any other comment? Thank you. Thank you. जी खुरम, मैं आपकी बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। आई एम एक्चुअली इन दिस प्रोसेस राइट नाउ, जहाँ पे आप जो रिकमेंड कर रहे हैं या आप जो कमेंट कर रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ ए बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे आप लोगों से लेके और देन यू अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म। और इसमें प्रॉब्लम ये है जो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मैं जो फेस कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कहने को they want to transform, but they themselves are a big hurdle, or यानी कि they are a big blocker towards that transformation, जहाँ पे वो अपने existing processes को, especially organization जो मैट्रिक्स organizations हैं, just like पाकिस्तान के अंदर टाइकोस का स्ट्रक्चर है या इसके बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, they themselves उनके existing performance management systems होंगे जब आप जो कि conventional मेथड्स के ऊपर डिजाइन होंगे। जब आप एजाइल की लेके आते हैं तो यानी कि मैं आजकल एक स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ जिसमें जहाँ पे मुझे बंदों को केपीआईज देने हैं एजाइल के अंदर, उनकी ठीक है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर केपीआईज देने हैं, बट आप एक्सप्लोर करें ऑल यू गेट, आप यही वेलोसिटी चार्ट्स, बर्न डाउन चार्ट्स और इन चीजों के आपको केपीआईज आपको मिलेंगे, ठीक है। अब वहां पे आपको एक इनोवेशन चाहिए, आपको एक कुछ वो होता है ना गिव एंड टेक दोनों हाथों से, जहां पे आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ समझाना है, ठीक है कि यार ठीक है कि इस चीज के अंदर अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, इफ यू वांट दिस ट्रांसफॉर्मेशन देन यू शुड अडॉप्ट। और वो वही बात है कि एजाइल इज अ माइंडसेट, एक्चुअली एट द एंड इट्स नॉट फ्रेमवर्क्स, इट इज एक्चुअली अ माइंडसेट दैट नीड्स टू बी अडॉप्टेड। और बट या एग्जैक्टली या सो बट अगेन वो टिल दैट टाइम, ठीक है ना, आप अपनी अगेन वेलोसिटी आपकी वैसी सप्रेस हो जाएगी जब आप इन चैलेंजेस के साथ आएंगे, आप उनकी मतलब इन प्रोसेसेस को, उनके करंट स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है उसकी फुलफिलमेंट के अंदर लग जाएंगे तो प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है। तो वो so that is a challenge, or I'm still struggling. I have some solution but they are not something जो कि अभी तक जो मैं कहूँ कि हाँ यार I tried it, अभी मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर हूँ जहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ यार इट इज फेल्ड और इट वाज अ सक्सेस, आई एम नॉट, मैं अभी किसी उसके अंदर नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उमर। और मैंने जब कहा कि लोगों को समझे, तो जो लोग जो हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट टीम के तो नहीं लोग होते, मैनेजर भी तो लोग। तो हो क्या है कि आप लोगों को लोगों की तरह जब समझेंगे, और ये है कि आप अगर मैनेजर है तो मैनेजर अगर कहता है कि मुझे वेलोसिटी दो, मुझे ये रिपोर्ट दो, उसको साल बैठाएं, उसको कहते हैं ये सर ये वेलोसिटी और ये रिपोर्ट तैयार है, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं टीम को मोटिवेट करना चाहता हूँ, ये इनका मकसद क्या है। जब आप देखें, जब आप लोगों को मकसद क्लियर होगा ना तो वो काम करेंगे। और ये है कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि अब इस पूरी कन्वर्सेशन में मैंने एजाइल का वर्ड कितनी दफा यूज किया है, कोई काउंट करके बता सकता है कितनी दफा यूज किया है? मेरे ख्याल से एक दो दफा यूज करना पड़ गया होगा मुझे। बात यह है कि देखें कि अभी जो करंट जहाँ पे भी है जहाँ पे आप खड़े हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें और देखें वहाँ पे आप चेंजेस क्या ला सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वो कंपनी रन कर रहा है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियन ऑफ रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर आप अपने आप को उस पोजीशन पे रखेंगे तो आपको तो रात को ये नींद आती होगी कि यार ये मैंने पैसे लगाए हुए हैं, ये बंदे काम भी कर रहे हैं कि नहीं। दरअसल यही एक मसला है, उनकी टेंशन ये है कि मैंने पैसे लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर उनकी टेंशन चेंज हो जाए कि यार मेरी अंदर टीम कल्चर है कि नहीं, ट्रस्ट है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, मैं आपको ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ जो कि मैंने देखी है। तो वो लोग जो है
एक्स्ट्रा माइल्स जाते हैं। पाकिस्तानी लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है डंडी मारने वाले बहुत सारी जगह है दुनिया में, ये मत कहेंगे सिर्फ पाकिस्तान, डंडी मारने वाले सारी जगह पे हैं। जब आप उनके साथ ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। और आई डोंट उमर, जस्ट ए क्विक क्वेश्चन, और मुझे लगा कि शायद बाकी लोगों ने भी जाना होगा, आपका रोल। हेलो, We have the last question from Murtaza. ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नहीं, मैं कमेंट्स करना कर चाहूंगा। जैसे ही उमर ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कोई किसी भी सिस्टम को लेके आने के लिए आपको चैलेंजेस दरकार होते हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के माइंडसेट को समझे। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज को भी समझे, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, कि उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। और उसके बाद देखिए हर कोई जो है यहाँ पे फॉर द हेयर फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स, आप सबसे पहले उसको बेनिफिट्स बताएं कि ये वो चीज है जो बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं, और इसकी वजह से तो जब अगर आप बेनिफिट्स बताएंगे उसके और इम्पैक्ट बताएंगे कि ये अगर ये चीज आएगी तो उसकी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उससे हमें हासिल क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि आप इस चीज के इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। उमर की बात पर मैं आगे कमेंट्स कर रहा था और आपकी बात को सेकंड भी करता हूँ, और प्लस मैं ये ऐड भी करना चाहता हूँ कि आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी समझे कि वो करना क्या चाहते हैं। और अगर हम ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है XYZ, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उसके क्या वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज के ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटेजीज के ऊपर उसको और फायदा देगा या नहीं। अगर क्योंकि वही वाली बात है आपकी $1 मिलियन वाली बात है कि आप मैंने $1 मिलियन लगाए हैं और आप अचानक से ऑल एंड सडन या कोई भी अगर आप XYZ लेके आ रहे हैं तो उसका फायदा भी तो होना चाहिए। एग्जैक्टली, सो जस्ट टू रैप दिस पॉइंट अप, और उसके बाद में आई विल हैंड ओवर टू नुमान। We have I think we have a question from Wasif as well. He has raised his hand. Yeah, so Wasif? just before going to Wasif, Yes. I just want to wrap up the conversation. देखिए, I just want to मैं curious हूँ, Umar, what is your role there? जो आपने एग्जांपल दी। Agile coach. अच्छा, देखिए, this I don't want to be disrespectful to you or someone else. आप अपने आप को सेल्फ असेस करें कि आपको और कौन सी कॉम्पिटेंसीज चाहिए। देखिए, अब फॉर एग्जांपल किसी को अगर आप जाके कह रहे हैं तो आपकी अपनी नॉलेज कितनी है, आपकी अपनी रिसर्च कितनी है कि जब आप उनसे किसी से बात करेंगे वो कहेंगे यार इस बंदे ने कुछ स्टडी किया हुआ, रिसर्च किया हुआ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें, कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करें। यूजुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए, टीचिंग आनी चाहिए, आपको फैसिलिटेशन आनी चाहिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग आनी चाहिए, आपको प्रोफेशन कोचिंग आनी चाहिए, आपको फीडबैक के ऊपर काम करना आना चाहिए। जो मैं पॉइंट ये कहने की सोच रहा हूँ एम्फसाइज कि बहुत दफा हम देखते हैं कि वो जो सामने वाली जो चीज है ना वो ठीक नहीं है, एंड वी फॉरगेट आवर ओन सेल्फ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इनवाइट यू, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन भी दिए थे कि रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस पहले डेवलप करें, तो जब आप किसी से बात करेंगे तो वो यकीन करें वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करें तो लोग आपको वो कहेंगे वी विल हेल्प यू। लेकिन वो जो छोटा सा एलिमेंट है ना, वो उसको अब सेल्फ अवेयरनेस अपनी क्रिएट करें कि भाई अगर इस टीम ने मेरी बात नहीं मानी तो ये मेरी ईगो का मसला है या फिर कुछ चीज़ें मैं अपने अंदर लैक करता हूँ कि मैंने इनको बताया नहीं। मैं फॉर एग्जांपल जस्ट टू ड्राइव दिस अप, आप टीम के पास कहते हैं कल भी वो रिपोर्ट बनानी है, कल सुबह 10 बजे तक देनी है, ठीक है तो अगर आपका ये कम्युनिकेशन स्टाइल है वो तो शायद कोई भी ना कर ले, लेकिन आई डोंट नो वो कितना मोटिवेटेड होगा। या कम्युनिकेशन स्टाइल इज वेरी वेरी लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए इसके लिए, और इसको उस बंदे का इन्फ्लुएंस कितना है ये देखना जरूरी है। सबसे पहले आप इस चीज को, जब तक आप इस चीज के ऊपर अबूर हासिल नहीं करेंगे और आप किस तरीके से जो भी आपका प्रोजेक्ट है जब तक आप उसके ऊपर उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, यू विल नेवर
come up with the deliverables, what you want to deliver. Right. Perfect. Thank So you, let's Murtaza. start. Thank you. Yeah. Wasif? खुरम, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि जब भी आप कोई भी चीज चेंज करते हैं तो देन आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप समटाइम कभी भी जो चेंज होता है उसमें गॉसिप्स ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं और उसमें शायद नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली और मैं आपको बताऊं ये आप चेंज के बारे में पढ़ें। चेंज कैसे चीज़ों की होती है। एक लीडिंग चेंज बुक है जॉन कटलर की, वो पढ़ें। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब चेंजेस होती हैं तो उसके डिफरेंट स्टेप्स कैसे हैं। चेंज कर क्या होता है, जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी लो हो जाती है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है यार ये करना क्या है। उस मैनेजर ने ये काम करने को कहा लेकिन वो लोग ये टीम के अंदर हम स्क्रम लेके आ रहे हैं, वो एक जायल कोच ने कह दिया यार ये स्क्रम क्या होता है, यार ये प्लानिंग पता नहीं हम कैसे करेंगे, आओ इस तरह करते हैं, कुछ मोशिश मुझसे खाते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ चीज़ें पता चलती हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप चेंज ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे रोल हैं, या मैं तो कहता हूँ कि आप अगर किसी भी लेवल पे हैं, लेट इट बी डेवलपर या टेस्टर, ट्राई टू रीड अबाउट चेंज, व्हाट इज द चेंज माइंडसेट। लीडिंग चेंज एक बुक सर्च करें जॉन कटलर की, वो पढ़ें। इम्यूनिटी टू चेंज बाय रॉबर्ट कीगन, वो चेक करें और पढ़ें उसको। तो मैं जो कह रहा हूँ ना कि हम यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आपको अपने अंदर लर्निंग को लेके आना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर लर्निंग को नहीं लेके आएंगे, नए आइडियाज को नहीं देखेंगे कि यार ये कैसे सोचते हैं, इन्होंने कैसे किया है, वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी करने के लिए बना। गैप ऑफ कैपेबिलिटीज भी देखनी चाहिए कि गैप ऑफ कैपेबिलिटीज देखनी चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर we are short of time. We have one question from Zawar, sir. So I'm really sorry. Right. Zawar, your last question. Murtaza sir, you can contact, discuss offline with the Khurram as well. Yes, Zawar, your last question. अस्सलामुअलैकुम खुरम, मेरा एक क्वेश्चन आपके प्रीवियसली डिस्कस पॉइंट के ऊपर था, जो आपने कहा था कि रूट लेवल के रिसोर्सेज से इनपुट लेने के बारे में आपने बात की थी। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेड टेस्ट पॉलिसी एंड वी डोंट नो अबाउट द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड at a certain time organization demands us to give the ideas about the test process innovations. ठीक है। The point is the gross level resources don't know what is the goal of the organization which they want to achieve from testing. How can they innovate or give some ideas about that? अच्छा, आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। You can just simply ask them कि if you want me to give an input on keyword strategy, आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्योंकि that should be aligned. इसके बारे में क्या कहते हैं आप? If you don't know, then why don't you ask them? Could that be a possible solution, Zawar? What you want to and what you want to get and why you want to get. Yes, Yeah. of course. First of all, we should have a documented test policy of the organization. Let's suppose they're not willing to give us. Let's suppose. Then we know the orthodox procedure which we are currently following, and we know the undocumented values of the organization, let's suppose, which we suppose that they want to achieve that and that goal from the testing. But there is nothing documented, and the grassroots resources which you are talking about, they are not sure that if they give any idea about the process innovation to the upper management, they would be accepted or not. What would be their reaction? Yeah, exactly. Yeah, go ahead. Yeah. Should they go for the approach that they suppose that these are the goals and give some idea to the organization, or should directly ask them, please provide us these and these things? Yeah, I think it's in a nutshell. जो मैं फिर वही बात करूँगा. I won't use the word resource. I would use the word people. लेकिन लोगों को मैं that's what I'm trying to emphasize कि आप लोगों को जिस फील्ड में भी हैं, you need to spend some time. You need to focus on your learning. अगर if someone is working in a QA and the person doesn't even know about the test plan, test report,
That's a strategy. I think उस बंदे को एक क्वेश्चन करना चाहिए रात को सोने से पहले कि ये मुझे वाकई इस फील्ड में होना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि these are very basic things. What I can do is, I mean, if you are really interested into learning, there are some, I think I had some books. Just give me a minute. Just give me a minute. Okay. Yeah. So, अगर आप टेस्टिंग के अंदर हैं, तो I wish if I was in Pakistan, तो ये मैं आपको फ्री में गिफ्ट ही कर देता. This is a nice book, Agile Testing. ठीक है. If you get hold of it, do it. It's a very nice book. Or Janet and Lisa again. This is the second book, More Agile Testing. These are the books that I read like many years ago. तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि फिर वही बात आ जाती है कि आप क्या वेट कर रहे हैं कि कोई आपसे पूछेगा तब आप करेंगे, या यू आर इन योर डोमेन, आप उसको खुद सेल्फ असेस करें कि यार मुझे स्ट्रेटजी और डॉक्यूमेंट ज़्यादा का नहीं पता, तो मैं कैसे अपने आप को एजुकेट करूँ. रीड द बुक्स. आजकल तो इंटरनेट बढ़े पड़ा है. लुक इनटू द यूट्यूब सेशंस. तो ये है. अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा कि जब आप ये नया, Actually, I'm sorry, I'm interrupting. Actually, I think you misunderstood my point. My question was not about the capability of the resource. I was talking about the available official documentations or policies of the organization. Resources have the that's post capabilities to do everything and know about the strategies and policies. अच्छा, इसका अगर मैं ये क्वेश्चन रिपीट करके कंफर्म करता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा कि कोई स्ट्रेटजी वगैरह रिपोर्ट बनानी है, तो आप उनके अगर can I add? Basically, yes, he want to ask a question that organization has not provided any direction or the strategy of testing, and organization is not willing to give any directions. So in this particular scenario, what that resource who is working in testing team should do. Am I right, Zawar? Yeah, exactly. अच्छा, ये तो बहुत ही हैरानगी. अगर ये सिचुएशन रियल है तो आई एम कंसर्न कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर उनके पास अपनी खुद डायरेक्शन नहीं है तो दैट्स ए बिग क्वेश्चन है. फिर मैं वही बात कहूँगा, जस्ट टू कम सर्कल बैक टू द सेम पॉइंट. अगर you are working in the organization, either you can go into a complaint mode कि भाई ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ नहीं दे रही, मैं क्या करूँ. सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई अगर आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, whatever is a service or product, take a step yourself और कुछ चीज़ें खुद बनाना शुरू करें. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गुड कि आप उनसे पूछें कि भाई हमें ये प्रोवाइड करें बिकॉज दिस इज ए नीड. और अगर वो नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई इट शुड बी सीक्रेट डॉक्यूमेंट. अगर वो नहीं करते, spend your quality time, चीज़ें नहीं सीखें, and then come up with your own strategy document और जो भी रोड मैप का डॉक्यूमेंट है. एम्फसाइज मैं इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि you have the wisdom, आपके अंदर टैलेंट है, you just need to focus कि आप खुद वो वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. Is it leading somewhere, Zawar? Okay. Khurram, we have to wind up because it's already 8:30. Yes. So thank you guys for your time and patience for attending this session. And it's weekend and almost it started. So I would like to thank all of you, and especially Khurram for sparing his time and giving a very good talk on the topic. Thank you all. Yeah, thank you very much once again. I hope you found some value and some new inspiration. Continue learning, continue growing, and continue question and understand why